I feel guilty when standing under a hot shower in the morning because the gas which is heating the water, even though paid for by me, is causing a 20% loss to the gas company due to UFG, unaccounted for gas. Additionally, each shower depletes the country's foreign exchange reserves because there is not enough local gas left. I feel guilty sleeping in an air-conditioned room, even though I pay my bills, because each night's comfortable sleep is adding to my country's circular debt, which has reached 2.5 trillion rupees, or 40 PC of our total tax collection. I feel guilty driving at 129 kilometers an hour, 9 kilometers above the speed limit but within the tolerance threshold of the motorway police, on our highways in my reasonably powerful, air-conditioned car, enjoying the beauty of the landscape and crops, grown by mostly struggling farmers, from tinted windows. That is because I know this infrastructural luxury, though having made life very easy for the elite, is not something the country can afford on borrowed money. Hardly any other country with a modest per capita income of $1,798 can boast of an extensive and expensive road infrastructure like ours. I feel guilty at buying imported cooking oil for my kitchen when I know that my country has to spend $4 billion every year on it, while we are made to rub our noses in the dirt by the IMF for a paltry $1.2 billion. I wonder why, being an agricultural country, we cannot grow more oil-producing crops, though we do grow bananas, strawberries, etc., products we did not grow traditionally before independence. Is it a mafia that does not allow it to happen? Why did we not get a leader who focused on the right priorities? I feel guilty when I drive into my house, part of a new real estate development project with broad roads, palm trees, embedded electric wires, parks and shopping malls, in short as good as any in the world, when I know my comfort and style is gobbling up precious agricultural and orchard land and encouraging everyone and his uncle to speculate in plots, rather than putting money in alternative businesses such as manufacturing. Investing in the latter would have generated employment and reduced our dependence on the dollar. I feel guilty driving my Japanese car, knowing fully well that even though there are pretensions of it being locally made, more than 70 PC of its components are imported, on which the country spends $2.9 billion every year. I wonder why it has not been possible in the 76 years of our existence to make our own car. Simply because we need brand new models every few years and like international specifications, or, again, is it an interest group that does not let it happen? I feel disgusted when I see the opulent offices of senior civil and military officers of a poor country. All of what I have written here shows I feel guilty that I have misguided the next generation, my children, to have faith in the future of this country and not emigrate. To work honestly and work hard so that this country could become great. I wonder why we did not get a leader in our 76 years who told us not to consume natural gas at the speed we did and made policies to ensure that the depleting gas fields were replaced by new discoveries, by making gas and oil prospecting attractive for the investor. I wonder why we did not get a leader who stopped power theft, even if his actions were politically unpopular, who made sure that our transmission capacity would be added simultaneously to production capacity even though perhaps kickbacks are less attractive in transmission projects, who carried out a proper cost-benefit analysis before investing heavily in new plants, which became white elephants because of the wrong location or the wrong choice of fuel. I wonder why we did not get a leader who prioritized education and health and told us that we will build motorways when our educated and healthy workforce earns enough to pay for it rather than constructing them on borrowed money. I have similar regrets for us having become used to living beyond our means as individuals and as a nation. I wish I was living in my Purana Pakistan where I was comfortable heating my bathwater in a drum, sweating it out under a fan, driving my beat-up car on a single road without a divider, eating food cooked in local mustard oil and visiting senior officers, both military and civil, in Spartan offices. At least I would not be getting butterflies in my stomach at the collapsing economy and consequent social upheaval. At least I would not be humiliated seeing Bangladesh and India forging way ahead of us. At least I would not be scared of having to trade my nuclear deterrence for money to repay my loans. I would be a happier man sleeping in a hot sweaty room but being able to hold my head high the next morning.
The writer is a former Commerce Secretary and member of the PTI Advisory Committee. Published in Dawn, December 10, 2022. For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu Meaning. Like, subscribe, share and comments. सुबह के वक्त गर्म शावर के नीचे खड़े होने पर मैं मुजरिम महसूस करता हूँ क्योंकि जो गैस पानी को गर्म कर रही है, हालांकि इसकी अदायगी मैंने की है, UFG गैस के लिए बेहिसाब की वजह से गैस कंपनी को 20% नुकसान पहुंचा रही है। मजीद बरा, हर शावर मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खार को कम करता है क्योंकि काफ़ी मकामी गैस बाकी नहीं है। मैं अपने बिलों की अदायगी के बावजूद एयर कंडीशन कमरे में सोते हुए खुद को मुजरिम महसूस करता हूँ क्योंकि हर रात की आरामदेह नींद मेरे मुल्क के गर्दिशी कर्जों में इजाफा कर रही है जो 2.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। हमारी कल टैक्स वसूली का 40% है। मैं अपनी शाहराहों पर 129 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हद से 9 किलोमीटर ऊपर लेकिन मोटरवे पुलिस की रवादारी की दहलीज के अंदर की रफ्तार से अपनी माकूल हद तक ताकतवर एयर कंडीशन कार में ड्राइविंग करने में कसूरवार महसूस करता हूँ। जमीन की तज़ीन और फसलों की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होता हूँ जो ज्यादातर जिदोजहद करने वाले किसानों के जरिया उगाए जाते हैं, रंगीन खिड़कियों से। इसकी वजह यह है कि मैं जानता हूँ कि ये बुनियादी ढांचे की ऐशो आराम अगरचे अशराफिया के लिए जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, कुछ ऐसा नहीं है जो मुल्क कर्ज के पैसे पर बर्दाश्त कर सकता है। शायद ही कोई दूसरा मुल्क जिसकी फीकस आमदनी $1,798 है, हमारे जैसे वसी और महंगे सड़कों के बुनियादी ढांचे पर फख्र कर सकता है। मैं अपने बावर्ची खाने के लिए दरामद शुदा खाना पकाने का तेल खरीदने पर मुजरिम महसूस करता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे मुल्क को इस पर हर साल $4 बिलियन खर्च करने पड़ते हैं, जबकि हमें IMF की तरफ से सिर्फ $1.2 बिलियन के लिए गंदगी में नाक रगड़ने पर मजबूर किया जाता है। मुझे ताज्जुब है कि एक ज़री मुल्क होने के नाते हम तेल पैदा करने वाली ज्यादा फसलें क्यों नहीं उगा सकते, हालांकि हम केले, स्ट्रॉबेरी वगैरह उगाते हैं, ऐसी मसनूआत जो हम आज़ादी से पहले रिवायती तौर पर नहीं उगाते थे। क्या ये एक माफिया है जो ऐसा नहीं होने देता? हमें एक ऐसा रहनुमा क्यों नहीं मिला जिसने सही तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की हो? जब मैं अपने घर में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं मुजरिम महसूस करता हूँ। वसी सड़कों, खजूर के दरख्तों, सरायत शुदा बिजली के तारों, पार्कों और शॉपिंग मॉल्स के साथ एक नए रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा मुख्तसर तौर पर दुनिया में किसी के तौर पर अच्छा है, जब मैं जानता हूँ कि मेरा आराम और स्टाइल कीमती जरी और बाग की जमीन को फेंक रहा है और हर एक और उसके चचा को प्लाटों में कियास आराई करने की हौसला अफजाई कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे मुतबादिल कारोबारों में पैसा लगाने के बजाय। मुअख्खर जिक्र में सरमायाकारी से रोजगार पैदा होता और डॉलर पर हमारा इन्हिसार कम हो जाता। मैं अपनी जापानी गाड़ी चलाने में खुद को कसूरवार महसूस करता हूँ। ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके मकामी तौर पर बनाए जाने के बहाने भी हैं। इसके 70% से ज्यादा अज्जा दरामद किए जाते हैं, जिस पर मुल्क हर साल $2.9 बिलियन खर्च करता है। मुझे हैरत है कि हमारे वजूद के 76 सालों में अपनी गाड़ी बनाना क्यों मुमकिन नहीं हुआ। सिर्फ इस वजह से कि हमें हर चंद सालों में बिल्कुल नए मॉडल्स की जरूरत होती है और बैन अल-अक़वामी वजाहतों को पसंद करते हैं। एक बार फिर, क्या ये एक दिलचस्पी का ग्रुप है जो ऐसा नहीं होने देता है? जब मैं एक गरीब मुल्क के सीनियर सिविल और फौजी अफसरान के आलिशान दफातर को देखता हूँ तो मुझे नफरत होती है। मैंने यहाँ जो कुछ भी लिखा है इससे जाहिर होता है कि मैं मुजरिम महसूस करता हूँ कि मैंने अगली नस्ल, अपने बच्चों को गुमराह किया है कि वो इस मुल्क के मुस्तकबिल पर यकीन रखें और हिजरत ना करें। ईमानदारी से काम करना और सख्त मेहनत करना ताकि ये मुल्क अजीम बन सके। मुझे ताज्जुब है कि हमें अपने 76 सालों में एक रहनुमा क्यों नहीं मिला जिसने हमें बताया कि कुदरती गैस का इस्तेमाल इस रफ्तार से न करें जिस रफ्तार से हमने किया था, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसियां बनाएं कि गैस और तेल के इम्कानात को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाकर गैस और तेल के इम्कानात को नई दरियाफ्तों से बदल दिया जाए। मुझे हैरत है कि हमें एक ऐसा लीडर क्यों नहीं मिला जिसने बिजली चोरी रोक दी हो, भले ही इसके इक़दामात सियासी तौर पर गैर मकबूल ही क्यों ना हों।
जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि हमारी ट्रांसमिशन की सलाहियत को बैक वक्त पैदावारी सलाहियत में शामिल किया जाएगा, अगरचे ट्रांसमिशन मंसूबों में शायद कुक बेक्स कम पुरकशिश हैं। जिन्होंने नए पौधों में भारी सरमायाकारी करने से पहले मुनासिब लागत से फ़ायदा उठाने का तज्जिया किया, जो गलत मकामा ईंधन के गलत इंतखाब की वजह से सफ़ेद हाथी बन गए। मुझे ताज्जुब है कि हमें ऐसा लीडर क्यों नहीं मिला जिसने तालीम और सेहत को तरजीह दी और हमें बताया कि हम मोटरवेज इस वक्त बनाएंगे जब हमारी तालीम याफ्ता और सेहतमंद अफरादी कुव्वत इतनी कमाई करेगी कि वो कर्ज के पैसों पर तामीर करने के बजाय इसकी कीमत अदा कर सके। मुझे भी इसी तरह का अफसोस है कि हम इनफरादी तौर पर और एक कौम की हैसियत से अपने वसाइल से बाहर रहने के आदी हो गए हैं। काश मैं अपने पुराना पाकिस्तान में रहता, जहां मैं अपने नहाने के पानी को ड्रम में गर्म करने, पंखे के नीचे पसीना बहाने, बगैर बॉर्डर के एक ही सड़क पर अपनी बीट अप कार चलाने, मकामी सरसों के तेल में पका हुआ खाना खाने और स्पार्टन के दफातर में फौजी और सिविल दोनों तरह के सीनियर अफसरान के पास जाने में आरामदेह और पुरसुकून होता। कम अज कम मुझे गिरती हुई मईशत और उसके नतीजे में होने वाली मुआशरती उथल पथल पर अपने पेट में तितलियां नहीं मिलेंगी। कम अज कम मुझे बांग्लादेश और भारत को हमसे आगे निकलते हुए देखकर जलील नहीं होना पड़ेगा। कम अज कम मैं अपने कर्जों की अदायगी के लिए पैसों के लिए अपने जौहरी डेटरेंस की तिजारत करने से खौफजदा नहीं हूँगा। मैं गर्म पसीने वाले कमरे में सोता हुआ एक खुशहाल आदमी हूँगा, लेकिन अगली सुबह अपना सर ऊंचा रखने के काबिल हूँगा। मजमून निगाह साबिक सेक्रेटरी तिजारत और PTI की मशावरती कमेटी के रुकन है। डान अखबार में शाये शुदा 10 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.